we have some very important news followed by some MCQs, which are also relevant from the exam's perspective. So without any delay, let's just begin our session. The first news today that we have is related to child labor. It is about National Child Labor Project, and we will have an idea about what is this project, what are the uh, findings, and इससे related और सारी चीजें कि child labor actually होता क्या है, क्या current data की availability है related to child labor. So the center does not have any data on child labor in the country, and a reason for this is the drying up of budgetary provisions meant for the National Child Labor Project. So right now they are not having, the center is not having any kind of data related to child labor in our country. And इसका reason ये है कि जो बजट में जो फंडिंग होनी चाहिए नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट के लिए वो बहुत ही ना बराबर है. So let's just try and understand. तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा that actually what child labor is. Okay. So this term child labor is often defined as work that deprives children from their childhood, their potential and their dignity, and that is harmful to physical and mental development. तो child labor क्या है? Actually ये एक ऐसा लेबर वर्क है जो कि बच्चों के द्वारा किया जाता है, छोटे बच्चों के द्वारा, जो कि उनको उनके प्रॉपर फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट को हार्म करता है. अब जो टाइम बच्चे को स्कूल जाने का है, पढ़ने का है, फिजिकल एक्टिविटीज करने का है, इन दैट टाइम द चाइल्ड इज इन्वॉल्व इन सच एक्टिविटीज जिससे कि उसका फिजिकल एंड मेंटल हार्म हो रहा है. सो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज चाइल्ड लेबर, which refers to work that is mentally, physically, socially, or morally dangerous and harmful to children. तो ये ऐसा कोई भी लेबर, ऐसा कोई भी काम जो मेंटली, फिजिकली, सोशली और मोरली डेंजरस है और हार्मफुल है बच्चों के लिए, वो सब चाइल्ड लेबर में आता है. अब फॉर एग्जाम्पल कोई चाइल्ड एक्टर है, तो विल दैट बी कॉल्ड एज चाइल्ड लेबर? कोई चाइल्ड एक्टर है, वो किसी फिल्म में या किसी टीवी सीरियल में या किसी वेब सीरीज में काम कर रहा है, so will that be called as child labor? This you have to tell me in the comment section. Okay. Interference with their schooling by depriving them of the opportunity to attend school, obliging them to leave school prematurely, or requiring them to attempt to combine school attendance with exclusive long and heavy work. तो या तो ऐसा काम, ये काम कैसा होगा, या तो स्कूल के साथ इंटरफेयर करेगा कि वो फिर स्कूल नहीं जा पाएंगे, अटेंड नहीं कर पाएंगे, प्रॉपर अटेंडेंस नहीं होगी उनकी, या फिर उनको स्कूल पहले ही छोड़ना पड़ेगा, या फिर स्कूल के साथ साथ बाकी काम करने पड़ेंगे जिससे कि वो फिर अच्छे से हो नहीं पाएगा क्योंकि ओवर बर्डन हो जाएगा बच्चे के ऊपर कि स्कूल भी कर रहा है और एक्स्ट्रा काम भी कर रहा है. तो ऑल दैट थिंग्स आर अंडर द अम्ब्रेला टर्म चाइल्ड लेबर. ओके. Now that we have understood what is child labor, now we will try to understand quickly that what is this National Child Labor Project. Okay. इसको हम शॉर्ट में NCLP बोलेंगे. So बार बार I will not be calling National Child Labor Project. You will be able to understand when I am saying NCPL. So NCLP scheme is a central sector scheme under the Ministry of Labor. So ये central government की scheme है. ठीक है, और ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंदर आती है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दोनों बातें ही इंपॉर्टेंट है. सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंदर. अंडर दिस स्कीम द डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट सोसाइटीज आर सेट अप एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट टू ओवरसी द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट. तो इस स्कीम के अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट सोसाइटीज बनाई जाती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, और उसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो कौन होते हैं? उस डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर जो होंगे वो उसके
जो है उसका इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे, प्रोजेक्ट का ठीक से हो रहा है शहर में या नहीं। ठीक है। नाउ अंडर दिस स्कीम द चिल्ड्रन इन द एज group of 9 to 14 years are withdrawn from work and put into NCLP special training center। तो इस स्कीम के अंदर क्या किया जाता है कि जो 9 से 14 साल तक के बच्चे हैं उनको जो भी वो काम कर रहे हैं उससे विड्रॉ करवा के उनको ये स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं उसमें डाल दिया जाता है, नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट के अंतर्गत ये होता है। ठीक है। And then they are provided with bridge education, vocational training, midday meals, stipends, healthcare, etc. before being mainstreamed into formal education system। अब वहां से उनको बच्चों को चाइल्ड लेबर उनका रोक के उसको वहां से काम करते हुए हटा के उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम में डाल दिया जाता है। एंड यहाँ पे उनको ब्रिज एजुकेशन मतलब जो भी उनका छूटा है ऐसी एजुकेशन की उनको मेन स्ट्रीम में जाने से पहले बेसिक जो एजुकेशन है वो दी जाती है, वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो किसी काम काज को सीख सके, वोकेशन में इन्वॉल्व हो सके, और मिड डे मील कोई कुछ स्टाइपेंड अगर वो कुछ काम कर रहे हैं, कोई ट्रेनिंग में इन्वॉल्व है, कोई इंटर्नशिप में इन्वॉल्व है तो उसके लिए उसको कुछ स्टाइपेंड, हेल्थ केयर एक्सेट्रा दी जाती है इससे पहले कि उनको फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में भेजा जाए। The children in the age group of 5 to 8 years are directly linked to the formal education। तो जो छोटे बच्चे होंगे 5 से 8 साल के उनको डायरेक्टली फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में डाल दिया जाएगा थ्रू अ क्लोज कोऑर्डिनेशन विद द सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान के तहत उन बच्चों को डायरेक्टली उनको लिंक कर दिया जाएगा फॉर्मल एजुकेशन से। A dedicated online portal named Pencil, which is a platform for effective enforcement for no child labor, is developed for better monitoring and implementation। तो इसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल भी बनाया गया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया है जिसका नाम है पेंसिल, फुल फॉर्म प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव एनफोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर। ठीक है, बेटर मॉनिटरिंग और इम्प्लीमेंटेशन के लिए ये बनाया गया है। किसके बेटर इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग के लिए? नेशनल चाइल्ड लेबर। ठीक है, ओके। So now why is it in news these days? That we are going to see now. So no ministry has any data regarding the status of child labor in our country. तो किसी मिनिस्ट्री के पास प्रॉपर डेटा है ही नहीं कि चाइल्ड लेबर का क्या स्टेटस है कंट्री में, कैसे पता चलेगा जब डेटा ही नहीं कलेक्ट हुआ है। तो the NCPL schools for child laborers work for 3 to 4 years and they have also more or less stopped functioning due to scarcity of fund। तो जो ये नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो स्कूल खोले गए थे चाइल्ड लेबरर्स के लिए कि उनको वहां पे पढ़ाया जाए या उनको प्रॉपर एजुकेशन दी जाए, वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाए, खाना पीना दिया जाए, ऑल दैट, वो भी 2-3-4 साल चले एंड उसके बाद स्कैर्सिटी फंड की कमी की वजह से उनका भी काम करना बंद हो गया। Education Ministry also does not have a mechanism to find out the number of children engaged in child labor। तो जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है उसके पास भी कोई मैकेनिज्म है नहीं ऐसी जिससे कि वो फाइंड कर सके कि व्हाट एग्जैक्टली इज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु आर एंगेज्ड इन सच एक्टिविटीज। तो ये एक बड़ी बात है एंड ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है कि आपको पता ही नहीं है कुछ गलत हो रहा है कंट्री में, कितना हो रहा है। छोटे छोटे बच्चे जो कि हमारी कंट्री का फ्यूचर है वो ऐसे काम में इन्वॉल्व है जिससे उनका मेंटल, फिजिकल एंड सोशल डेवलपमेंट जो है वो खराब हो रहा है, हो नहीं रहा है। एंड हमारे पास पूरी इंफॉर्मेशन भी नहीं है कि एक्चुअली कितने बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है एंड क्यों हो रहा है एंड इसको कैसे खत्म करना है। तो जब हमें पता ही नहीं होगी ग्राउंड लेवल पे सिचुएशन क्या है तो हम उसे खत्म करने के लिए क्या करेंगे, फिर तो हम कितने भी प्रोजेक्ट्स बना लें, इट विल नॉट वर्क, राइट? ओके, नाउ व्हाट आर द ग्रेव कंसर्न्स फॉर द इशू? So this is a serious situation, or as we have just discussed,
It is for the first time that a parliamentary panel is engaged in a detailed examination of the national policy on child labor. तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि पार्लियामेंट्री पैनल जो है वो इंगेज हो रहा है चाइल्ड लेबर जैसी नेशनल पॉलिसी में. दो वी हैव लेजिस्लेशन द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट सिंस 1986, द मीनेंस ऑफ चाइल्ड लेबर इज कंटिन्यू अनचेक्ड. 1986 से एक्ट तो है, बट फिर भी कुछ चेकिंग, कुछ इश्यूज को देखना, रिजॉल्व करना कुछ हो ही नहीं हुआ. And that is the biggest problem. Now, hopefully in future it will happen because पहली बार कोई parliamentary panel engage हो रहा है इसको examine करने में. So let's hope for the best and let's see. Okay. So now we will see what are the various provisions against child labor. Okay. Now, first is Article 23 of the Indian Constitution states that any type of forced labor is prohibited. So this is Article 23. ये articles याद करने important होते हैं. याद भले ही actually number भी याद रह जाते हैं when you practice a law. But initially at least you should be able to have at least an idea कि ये article किस बारे में बात करता है. Okay? Then we have Article 24, which says that a child under 14 years cannot be employed to perform any hazardous work. So कोई भी बच्चा जो 14 साल से कम का है वो कोई भी ऐसे एम्प्लॉयमेंट में एंगेज नहीं होगा जो कि hazardous हो उसके लिए. ठीक है. Then Article 39, the health and strength of workers, men and women, and the tender age of children are not abused. Okay. Then we have the Child Labor Act Prohibition and Regulation 1986 जो हमने पीछे भी देखा था, prohibits children under the age of 14 years to be working in hazardous industries and processes. So ये एक्ट भी यही कहता है कि 14 साल के अंदर के जो भी बच्चे होंगे वो किसी भी hazardous industry या ऐसे किसी भी प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होंगे. Okay, so with this we come to an end to this particular news. Now we have second news which is related to national emblem. Let's try read and understand. So, a day after the national emblem cast on the top of the under construction parliament unveiled, controversy has erupted over its aggressive posture. So, जो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बन रही है वहां पे वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, वहां पे नेशनल एम्बलम लगाया गया है, बड़ी सी बनाया गया है ये. एंड उसको अभी इनॉग्रेट भी किया हमारे पीएम ने. So उसके बारे में है. एंड जो कंट्रोवर्सी है उसके ऊपर हो रही है, ऑपोजिशन बोल रहे हैं कि उसमें उतना ग्रेस नहीं है जितना ओरिजिनल एम्बलम में है. So let's read and understand. So national emblem of India. On 26 January 1950, a representation of the lion capital of Ashoka placed above the motto Satyamev Jayate was adopted as the state emblem of India. So 26 जनवरी 1950 में ये जो लायन वाला था जो अशोक के टाइम में बना था, सम्राट अशोक के टाइम में जो बना था, उसको हमारा नेशनल एम्बलम घोषित किया गया था, जहाँ पे सत्यमेव जयते के जो मोटो था वो लिखा. The emblem is an adoption of the lion capital of Ashoka, an ancient sculpture dating back to 280 BCE during the region of Maurya dynasty. So Ashoka जो थे वो एक मॉडर्न किंग थे, उनके टाइम का ये जो है ये अडॉप्ट किया गया है वहां से, लायन कैपिटल ऑफ अशोका से. और ये एक बहुत ही पुराना एंशियंट स्कल्पचर है जो कि 280 BCE के टाइम मिला था in the reign of Maurya Empire. It was originally made of Chunar sandstone. So originally किसका बना था? Chunar sandstone. The statue is a three-dimensional emblem showing 4 lions. So it has actually 4 lions, but एक साइड से आप देखोगे तो 3 ही दिखेंगे कि एक फिर वो पीछे हो जाता है. So at once
you can only see 3, but there are 4 lions actually. Okay. Now, what are the features of our emblem? The actual Sarnath capital features 4 Asiatic lions standing back to back, symbolizing power, courage, confidence, and pride, mounted on a circular base. So there is a circular base, and उसके ऊपर 4 एक दूसरे से पीट करे हुए लायंस हैं, एशियाटिक लायंस हैं, और वो क्या सिंबलाइज करते हैं? पावर, करेज, कॉन्फिडेंस, प्राइड. Okay. At the bottom is a horse and a bull, and at its center is a dharma chakra. Okay. So there is a dharma chakra. You can see this. Okay. The abacus is guarded with a frieze of sculptures in high relief of the lion of the north, the horse of the west, the bull of the south, the elephant of the east, separated by intervening wheels, over a lotus in full bloom, exemplifying the fountainhead of life and creative inspiration. तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, इतना डीप you never know, कभी पूछा भी जा सकता है, and we can't predict that. So this you have to just have an idea. To have an idea, आप इसको थोड़ा एक दो बार read करेंगे. So I think you should also have an idea about this. कौन से direction में क्या क्या है, you never know, कब कुछ होगा. Carved from a single block of sandstone, the polished capital is crowned by the wheel of the law. So ये single block stone से बना है. Okay, so now what is the historical significance of this emblem? So one of the Buddha's names in Shakyasima, meaning lion of the Shakya. Actually हमें पता है कि जो सम्राट अशोक थे, वो बुद्धिज्म को बड़ा ही उसका प्रचार प्रसार करते थे, and he was actually he converted into Buddhism, and वो बहुत ही ज़्यादा फिर non-violent and all that he became. So you must have read that in history also. The Buddha's first sermon at Sarnath was known as the Simhananda lion roar of the Buddha. So sermon is जैसे धर्म उपदेश जिसे बोलते हैं कि जब कोई रिलीजियस टीचिंग करते हैं, so वो फर्स्ट जो थी वो सारनाथ में थी, एंड इसको सिमानदा बोला जाता है या लायन रोर बोला जाता है. ठीक है. So with this we come to an end to this particular news also. Now we move to the third news, which is related to this Kanimara teak. It's a tree. I hope you can see this image and you can read this also. This tree, one of the biggest natural teak trees of the world, was awarded the Mahavriksha Puruskar by the government of India during 1994-95. I hope it is visible to you. Okay, so the legendary Kanimara teak of the Parambikulam Tiger Reserve is still growing in height and gain. So ये जो particular tree है, इसको already 1994 and 95 में महावृक्ष पुरस्कार इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा प्रदान किया जा चुका है, but still ये अभी भी height में and बढ़े जा रहा है. Now what is the news right now? Over the last 5 years, the centuries-old teak has grown by 1.85 meters in height and 9 centimeter in width. So ये 9 centimeter and height में 1.85 meter बढ़ता ही जा रहा है in last 5 years. This might be one of the largest and oldest teak trees in the world. Now there are some facts about this tree. Worshipped by the tribes of Parambikulam, the Kanimara teak
remains a flagship of the Tiger Reserve, offering a spectacular view to visitors. Okay, so ये बहुत ये जो वहाँ के जो ट्राइब्स हैं वो इस पेड़ की पूजा भी करते हैं और जो टाइगर रिजर्व है वहाँ पे ये एक बहुत अच्छा व्यू देता है टू दी विजिटर्स. For the tribes people of Parambiculam, it is still a version tree. So वहाँ के जो ट्राइब पीपल है उनके लिए ये अभी भी एक वर्जिन ट्री है. That was why they named it Kanimara, means virgin tree. So this is a word which means virgin tree. The tribal legend has it that the tree had bled when people tried to cut it. So वहाँ के जो ट्राइबल लेजेंड्स हैं वो ये मानते हैं कि अगर जब लोगों ने इस पेड़ को काटने की कोशिश की तो इसमें से जो ट्री था it started bleeding. So they protected it and started worshipping the tree by offering an annual puja. तो जब उन्होंने ये सिचुएशन देखी कि जब उन्होंने पेड़ को काटने की कोशिश की एंड स्टार्टेड ब्लीडिंग, तब से उन लोगों ने उस पेड़ की पूजा करना शुरू कर दी, उसको प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया और साल में उसकी पूजा की जाती है. The Kanimara tree had won the Union government's Mahavriksha Puraskar in its first year of introduction in 1994. So 1994 में अब यहाँ पे दो टेकअवेज हैं. एक तो ये कि इस ट्री को मिला है महावृक्ष पुरस्कार और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये भी है यहाँ पे कि पहली बार महावृक्ष पुरस्कार कब शुरू हुआ. तो दैट स्टार्टेड इन 1994. तो जब 1994 में स्टार्ट हुआ तो सबसे पहला यही पेड़ था जिसको कि ये पुरस्कार दिया गया था. ओके. Now, the next news that we have is related to that NASA has recently unveiled image capture from the James Webb Space Telescope. So this is a telescope by NASA. I hope this image is visible to you. An image of Southern Ring Nebula from NASA James Webb Space Telescope. Okay, so let's try to have an idea about this. The James Webb Space Telescope. So ये है क्या? It is the largest and most powerful orbital observatory ever launched. तो ये सबसे बड़ा और पावरफुल ऑर्बिटल ऑब्जर्वेटरी है. ऑब्जर्व करेगा जो ऑर्बिट को, वो है ये. It will offer scientists the opportunity to observe galaxy evolution, the formation of stars and planets and exoplanetary system. So ये एक बहुत ही हेल्पफुल टेलीस्कोप है जो कि हेल्प करेगा साइंटिस्ट को ऑब्जर्व करने में evolution of galaxies, formation of stars, planets and other things. Webb is the successor of Hubble telescope. So this is important. It is the successor of Hubble telescope. It is an infrared spectrum based telescope. Very important. क्या बेस है इसका? Infrared spectrum based. It's a NASA built space telescope that also includes contribution from the Europe Space Agency and Canadian Space Agency. So which are involved, this also you have to remember. Okay. So NASA built है ये और इसमें और कौन किसका contribution है? Europe Space Agency का and Canadian Space Agency का contribution है. Okay. So with this we have come to an end to our news for today. I'll quickly take you for a revision, then we will see the questions for today. Okay, so the first news article that we had for today was related to that the center is having no data on child labor. We saw that why is it the case that they are not having any data? Then primarily we see that what is child labor.
कोई भी ऐसे बच्चे जो इन्वॉल्व हैं फिजिकल, मेंटल एंड मोरली डेंजरस और हार्मफुल एक्टिविटीज में, they are working in such environment, then that is actually child labor. Okay, and age जो है वो 14 साल का. Then we also understood that what is this national child labor project. Okay, and after understanding this, we also understood that actually इसके through जो schools वगैरह खोले गए, they actually did not work very well. Why is it in news now? Because they have no mechanism actually to find out the number of the children who are engaged in child labor, and now the parliamentary panel is very much concerned about this, and they want to have some kind of policy to examine what is actually the number of children who are engaged in such activities which are causing such huge number of child labor. Okay, and then we also saw the various provisions against child labor in the constitution acts that are there in the constitution that we saw, followed by the act, which is the Child Labor Act Prohibition and Regulation 1986. Okay, then after this we saw the another news, which is the remark of opposition, which says the grace missing in replica of emblem says opposition. ठीक है, तो इसमें हमने देखा कि हमारा जो नेशनल एम्बलम है वो कब और कहाँ से लिया गया है. अभी जो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है पार्लियामेंट की, नए पार्लियामेंट की, वहां पे ये इनॉग्रेट हुआ है, उसका जो है रेप्लिका बनाया गया है, वो सब हमने देखा. कहाँ से अडॉप्ट है, अशोकन टाइम से जो में जो ये स्कल्पचर था वहां से अडॉप्टेड है. ऑल दोस थिंग्स वी सॉ. किस सैंडस्टोन का बना हुआ है वो हमने देखा. क्या इसकी सिचुएशन है वो हमने देखी. कहाँ कहाँ क्या क्या चीज है, कहाँ पे हॉर्स है, कहाँ पे बुल है, कहाँ पे एलिफेंट्स है, कैसे सेपरेट हो रहे हैं. ऑल दैट वी सॉ इन दिस पर्टिकुलर न्यूज. फीचर्स ऑफ एम्बलम इज वेरी इंपॉर्टेंट. Okay, then we also saw the historical significance of this particular emblem. Okay. With this, we moved to the another news which is related to Kanimara tea. Kanimara is basically the meaning of Kanimara is the virgin tree. So this is a very huge tree जिसको कि 1994-95 में महावृक्ष पुरस्कार मिला था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा. और ये अभी न्यूज में इसलिए क्योंकि अभी भी ये रुक नहीं रहा है और बहुत ही ज्यादा हाइट पे बढ़ता जा रहा है. और ये कहाँ पे है, परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व में है. ठीक है, तो दिस इज इम्पोर्टेंट. परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व में ये पेड़ जो है वो पाया जाता है. ठीक है, फिर इस ट्री के हमने बाकी फीचर्स देखे क्या क्या है. एंड इस ट्री को एक जो वहाँ के ट्राइबल पीपल हैं वो इसको वर्शिप करते हैं. तो इसकी पूजा की जाती है वहाँ पे. And with this, we moved to the another news, which is about NASA's James Webb Space Telescope. इसके बारे में हमने देखा कि ये जो टेलीस्कोप है ये किसने बनाया है. नासा के द्वारा बना है, और इसमें और भी यूरोप स्पेस एजेंसी और कैनेडियन स्पेस एजेंसी का भी कंट्रीब्यूशन है. ये एक इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम बेस्ड टेलीस्कोप है और ये हबल टेलीस्कोप का सक्सेसर है. देन वी सॉ कि क्या क्या इसके फायदे हैं. ये हेल्प करेगा साइंटिस्ट को गैलेक्सी इवोल्यूशन देखने में, फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स वगैरह देखने में. इट विल हेल्प. नाउ वी हैव these questions which we will try to read and understand, and then we will try to answer them. So we have these three statements. First we will read them and then we will see the codes. The next round of NDCs, which is National Determined Contribution, is due only in 2025. Okay. Next statement, only Egypt and New Zealand have responded to a call that countries should revisit their NDCs by the end of 2022 to strengthen them. Next statement, the member countries of the like-minded group include Belarus, Bhutan, China, and India. Now we have to find the correct code. Okay, always underline this word, whether correct or incorrect.
The options are 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3, and all of the above. I think you will be able to answer this if uh, you can use the elimination method for X. At least though you can eliminate. Okay, so answer C. Option C is the correct because 1 and 3 are correct. Second is not correct क्योंकि New Zealand नहीं है. Only Egypt and Australia have responded to a call that countries should revisit their NDCs by the end of 2022 to strengthen them. Okay, so that is why option C is correct, 2 is wrong. Okay, with this, let's move to the next question. Okay, so the next question is just related to our telescope that we have just studied about. NASA has described the Webb's first deep field image as the deepest and sharpest dash image of the distant universe to date. It shows a galaxy cluster called this, and more. So you have to fill this blank with any of these words: infrared, ultraviolet, X-ray, virtual. This is very easy. मैंने जब ये news पढ़ाया तो I also emphasized on this and I kind of forgot कि ये question है. So I think you people will be able to answer this. This is actually infrared. Okay. So option A is the correct answer. So the James Webb Space Telescope is a space telescope designed primarily to conduct infrared astronomy. Okay. So I think, yeah. So with this, we have come to an end to our daily discussion, the daily current affair discussion for today. I'll meet you soon tomorrow with another session on daily current affairs. Till then, I hope you will keep studying and working